नॉर्थ ईस्ट के लिए कांग्रेस का समय में लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखो। मोदी जी आने का बाद कहा कि ये लुक ईस्ट से होता नहीं है, आप एक ईस्ट पॉलिसी, आप पूर्वोत्तर राज्यों में आएंगे कोई भी असर पड़ जाएगा। असर ये है कि हमारा ज़माने में 2 लेन कियासी से हम लोग को आता ही नहीं था ना। असम में भी 1-2 सड़कें थे 2 लेन, बाकी जगह में आप मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, हमारा अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम 2 लेन होता नहीं था हमारा वहाँ, सिंगल लेन। आज कहीं ऐसा सड़क नहीं है। मोदी जी आने का बाद एक इस पॉलिसी को लागू करने के बाद, आप मेरा ही अरुणाचल का एग्जाम्पल लीजिए। कांग्रेस समय में एक प्लानिंग कमीशन होता था, उस प्लानिंग कमीशन में ही एक कानून था कि हम चाइना बॉर्डर की ओर सड़कें नहीं बनाना है, मिडिल में सड़क बना के रखता था बिहारों का। इसलिए जो भी चाइना का ऑक्यूपेशन इशू ये सब आता है तो वो नो मीन्स लेन होके बेता है। तो मोदी जी आने के बाद आसाम बॉर्डर से लेके चाइना बॉर्डर तक 2 लेन, और हमारा अरुणाचल में स्पेशली 9 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड 62 के बाद बना था। सारा सब एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जिसको हम एयरपोर्ट बोलते हैं, एबंडन करके रख दिया था। अब नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक का आना जाना के लिए भी सुविधा खत्म था। लेकिन मोदी जी आने के बाद आउट ऑफ 9 एबंडन एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, वहाँ पूरा आउट ऑफ 9 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड रिनोवेट एक्टिवेट हो गया। अभी हम कलकत्ता से दिल्ली, हमारा होम टाउन पासीघाट में एयर सर्विस है, तेजू में एयर सर्विस है, और ईटानगर में 15 अगस्त 2022 में अब बोइंग उतरेगा। दिस इज़ द सेंस कि मोदी जी का ये विचार है कि अपना नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को बचाए रखना, वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आप 2-3 कनेक्टिविटीज़, रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। अभी ईटानगर में रेलवे कनेक्टिविटी हो गया। अभी अरुणाचल में तवांग तक रेलवे लेके जा रहा है, और हमारा पासीघाट में रेलवे, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जब कैंपेन में आए थे उसका बाद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बहुत जगह में आप नागालैंड और कनेक्ट हो रहा है, मणिपुर कनेक्ट हो रहा है, मिजोरम कनेक्ट हो रहा है, मेघालय कनेक्ट हो रहा है। तो अभी ये सब चीज़ जो चेंजेस लाया है मोदी जी का, एक इस पॉलिसी को लुक इस पॉलिसी को एक इस पॉलिसी, इस बार का बजट में भी 2022 बजट में भी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को कितना थाउजेंड्स दिया है, करोड़ों में दिया है। तो चेंजेस नॉर्थ ईस्ट में बहुत लाए हैं। अब एम्स एम्स का मेडिकल बनाना, जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर में अंडरग्राउंड ब्रिज बनाना, ऊपर में ब्रिज बनाना, और हमारा सौदिया ब्रिज बनाना, और 3 एयरपोर्ट अभी अरुणाचल में बनने जा रहा है, सिक्योरिटी रीजन्स और पब्लिक सेवा के लिए। The biggest takeaway of each meeting with the Prime Minister when we come out is the abundant love he has got for Tamil culture and Tamil people. That is like, you can see he gets very excited. And when I had the opportunity to meet him in Delhi before his Tamil Nadu visit, I just opened my mouth, sir, we welcome you to Tamil Nadu, next week you're coming to Chennai. Immediately he became like a child. He's like, yeah, I'm coming, I want to meet, I'm very excited to come to Tamil Nadu. His love for Tamil Makkal, that is something which you got to be there to realize it. I don't think any non-Tamilian who's not born in Tamil Nadu, born somewhere in the country,
the kind of love he has got for Tamil Makkal, Tamil culture, Tamil people, I don't think anybody in the world has got that except Honorable Prime Minister. That is why we keep telling that he has got that Purva Janma connection to Tamil Nadu. So that he becomes like a child. He becomes very enthusiastic. So that is something, a key takeaway every time you walk out. Something related to Tamil Nadu, Tamil culture, he gets excited. He talks about the oldest language in the world is Tamil. He talks about our rich heritage, the quality of the architecture here, the finesse with which our temples are made. So all those very deep study. Recently we brought out a book also, Prime Minister's connection to Tamil Nadu. So it's a big compendium of everything he has done for the state. So when we had the opportunity to present this to the Honorable PM also, and I made an attempt to tell him that even big leaders, big politicians within Tamil Nadu don't have this body of work with respect to what they have spoken for Tamil Nadu. And PM is like, no, that I always love Tamil people, I always love Tamil culture, right from my Gujarat time, right from my Pracharak time. So it comes for me naturally from within my personality. So that is something that is very amazing for all of us. He has made a thorough study, and he has probably, a top person cannot have all the inputs for himself. He has to receive inputs from different persons. So one input that he received, even Tamil Nadu leaders may not know about the culture of Tamil. So that is also in Sanskrit. I will tell you what it is. It's called Yadum Ure, Yavaram Kedir. Modiji picked up that. And you ask some Tamilians, Tamil Nadu people, who said this? Where does it come? They didn't know. Modiji mentioned. It is said by Pongundran. You mentioned it. In a couple of meetings here, I was amazed. And then, in which book it comes? Purananur, Agananur. How many times you ask, even before you leave for Delhi, you ask 3-4 persons. Yadam Ure Yavaram Kid. What does it mean? It is nothing but Vasudhaiva Kutumbakam. It is in Sanskrit. You understand? He has made it. So he was able to connect that. That is the capacity of Modi. In last May 2023, when Modi ji restored the glory of the Sengol, coming from Tamil Nadu, we were all very humbled and moved. Because the Sengol has a very big history. When the transfer of power happened, they had asked Rajaji how it should be signified. And Rajaji were a deeply devout Hindu, and he knew the traditions and culture. And in the olden days, Sangam Chola era, they used to hand over the scepter or the sacred Sengol to denote transfer of power. So, Shaivite Adinams, which have a history of centuries, they were given the responsibility to make the sacred Sengol, and it was given. But unfortunately, the governments in Delhi, they cast away the sacred Sengol as a walking stick, and they put it away in a museum. But it was Narendra Modi ji who brought it back, revived its respect, glory, and then he placed it in the parliament. And it was something which connected to every person in Tamil Nadu. And not only that, now Modi ji has ensured that every time the parliament session opens, ceremonially, before the president, the Sengol is carried. Before this, nobody in Bharat knew the word Sengol. But the minute Modi ji, ensured and brought back the glory of the sacred Sengol, everybody knew about the Sengol. And so I thought it would be very nice as an expression of gratitude on our behalf. And since Rajaji was in some way connected, in the Sengol episode, which nobody knew. Everybody knew about other stories, but nobody knew about the Sengol. Only thanks to Modi ji, it had come out. So we had a very nice portrait where Modi ji is upholding, like upholding Dharma, is upholding the sacred Sengol, and he is walking. A very unique thing about this portrait was it was all done in
with Tamil alphabets. Every part of that portrait was with Tamil alphabets. And it had the words New Parliament Building, Modi ji. It also had a very good quotation from the Tirukkural number 56. You know how Modi ji, the kind of love and respect and pride he has in Tamil culture and language, and especially Tirukkural. Even when he was chief minister, after that he had made sure it was translated into Gujarati. Even when he went to Papua Guinea, he now translated it in the language. So there's a very nice version, number 556 couplet of the Tirukkural, which means that it is written in Tamil in the picture near his hand, and it means that a king or a ruler cannot win a victory by a sword. He can only win a victory by upholding Dharma, by wielding the sacred Sengol or the scepter in the correct way. And the epitome and symbol of that is Modi ji. So I had sent a picture of the Sengol, Modi ji holding the Sengol, written on in Tamil letters, and I think he was very glad, to have received that. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट को विशेष दृष्टि से देखते हैं। ये पता चलता है कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग 60 बार से भी ज़्यादा खुद वो नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। उनसे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हैं, सबका अगर नॉर्थ ईस्ट का दौरा जोड़ दिया जाए, फिर भी अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे ज़्यादा उनका सबका जोड़ के और मोदी जी का अकेला इतना दौरा वो किए हैं। सिर्फ यही नहीं, बीच बीच में वो सारे मंत्रियों को भेजते रहते। 600 दौरा से ज़्यादा हो चुका है हमारी सरकार की समय में। इस बार एक नई पहल डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। आपको सबको पता होगा कि अष्टलक्ष्मी उत्सव पहली बार हुआ है, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो आर्टिसन हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो हैंडलूम है, नॉर्थ ईस्ट के जो कल्चर है, वो दिल्ली में भारत मंडपम में वो दर्शाया गया। हज़ारों की संख्या में लोग दिखे, और ये जो मेन लैंड से कटा हुआ जो सेंस है नॉर्थ ईस्ट का था सालों से, क्योंकि लोग नहीं दिखते थे नॉर्थ ईस्ट पे, लोग नहीं जाते थे, प्रधानमंत्री कम जाते थे, बाकी मिनिस्टर कम जाते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने, उसके बाद से लगातार वो नॉर्थ ईस्ट के दौरा करते रहे, और इस नॉर्थ ईस्ट के दौरे में उन्होंने मंत्रियों को भी भेजा। इससे जो दूरी है, दिल की दूरी बहुत दूरी होती है। अब आजू बाजू बैठे लोग भी कभी कभी दिल की दूरी इतनी हो जाती है तो आपस में बात नहीं करते, लेकिन दिल की दूरी घटाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव के द्वारा, और आप थोड़ा एक कॉन्सेप्ट को सोचिए, इसको भी हमें बहुत बारीकी से इस पर ध्यान देना चाहिए कि सबसे नेग्लेक्टेड एरिया को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी का नाम दिया। 8 स्टेट, 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम, इन टोटल 8 स्टेट्स होते हैं। तो 8 स्टेट्स मिला के इसको माँ अष्टलक्ष्मी का नाम देना है, उनकी जो भावना है नॉर्थ ईस्ट को लेकर। और आगे आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट भारत का ग्रोथ सेंटर बन सकता है, पावर हब बन सकता है, प्रोडक्शन सेंटर बन सकता है, क्योंकि ये पूरा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। टूरिज्म में वहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ऐसी नए नए आइडियाज़ को सोचते रहते हैं। लोगों से भी चाहते हैं कि नए आइडियाज़ उनके पास पहुँचे, लोगों के पास नए आइडियाज़, उनके पास नए आइडियाज़ लेके लोग जाए